at Hyderabad. He was elected Fellow of the National Academy of Agriculture Science, India since 2016. Dr. Kuldeep's major achievements include securing about 35 externally funded projects developing 15 varieties over 30 genetic stocks. I am welcoming Dr. Kuldeep Singh. Sir, we are welcoming you. Request Barendra sir to give Kuldeep Singh a memento and a shawl. जोरदार ताली ही जाओ कुलदीप सिंह सांग पाई बहुत कष्ट रे आमर रिक्वेस्ट रक्षा करके सार आछंती देन आम गण रे अछंती आमर प्रिय अपा पद्मश्री साबरमती अपा जे कि आमको पथ प्रदर्शक अछंती से सबु चासी मानक पई गोटे प्रेरणा आमे तांको वेलकम करतु ए सेशन पई अपा तापरे आम पाखे अछंती आमर कस्टोडियन फार्मर जे कि अहिंसा फार्मर प्रोड्यूसर क्रॉप कंपनी लिमिटेड शिव भाई ही इज द ओनली रिसिपिएंट ऑफ प्लांट जेनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड 2012-13 में और ही हैज कंज्यूम्ड लॉट ऑफ राइस मिलेट एंड पल्सेस वेराइटी सो भाई वेलकम टू यू टू द सेशन नेक्स्ट आम पाखे अछंती Saroj Kumar Mahanti is the trainer, writer, speaker and traditional crop conservator. He has hosted the Deshi Bihana Suraksha Mancha and speaker of Paschima Odisha Krusaka Sangatana Samanaya Samiti Mancha. He has a lot of award in his name. Welcome Saroj Bhai to this session as farmers are more. So we want to listen from you. Next, ame welcome karibu Subhasa Mahanta, Mandia Maha Visare. से समस्त जानिचंदी तांको इज ग्रेट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन इज नाउ ही ऑलरेडी मेट आवर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो वेलकम सुभाषमा नेक्स्ट आमर अचंदी डॉक्टर के एन गणपति सीनियर साइंटिस्ट आईसीआर आईएमआर गणपति वर्किंग एज सीनियर साइंटिस्ट एंड ही हैज डेवलप्ड सो मेनी sorghum varieties and little millet crop improvement program. His achievement is CSB 38F, CSB 32F, CSB 47F, which is good in Odisha climate, and he has a lot of research on land races of finger millet of Odisha region. Actually, achandi Arsian Urani, je फेवर amara virtually. Next umpire achandi Dr. Dipti Ranjan Pani, ICR NBP, is a plant biotechnologist. Started his professional career in scientist through agriculture research services, and I welcome Pani sir. Next umpire achandi Mr. Dipal Rai Chaudhary, joint registered PPVFR, and he has good recognition on farmer awareness and registration process on as a farmer varieties. Welcome to Dr. Dipal Rai. Now all introduction is over. I am hand over session to the chair. Sir, you have it will be concluded at 12:45. Sir, take the time adjustment. Thank you, sir. Thank you सबको मेरा नमस्कार. सॉरी मैं ऑडियंस में तो नहीं बोल सकता हूँ और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोलने की कोशिश करूँगा ताकि सब में समझ आ जाए. मेरे साथ आज बहुत अच्छे लोग हैं, खासकर 3 फार्मर जो हैं, किसान जो हैं, जिनकी अपनी खुद की पहचान है. हमारे साथ पद्मश्री साबरमती जी हैं, बाकी मेरे साथी हैं. टाइम बहुत कम है हमारे पास क्योंकि 10 मिनट हम पहले कम कर चुके हैं. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर मैं अपने सब साथियों से कहूँगा कि टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखें. और सबसे पहले हम अपने प्रिय जो हमारे किसान हैं भाई, उनकी तरफ चीज़ जो है, कोई भी फसल जो है उसका बेस जो है वो बीज है, सीड है, उसमें वेरिएशन जो है वो है. तो इन लोगों ने अपने बलबूते पे खुद पे
जो कंजर्व किया है हमारा खासकर मिलेट्स, वो कैसे किया है, कौन कौन सी मुश्किलें इनको आई हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आए हैं, 2 या 3 मिनट इनसे हम सुनेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर शिवा प्रसाद साहू जी से कि वो 2-3 मिनट के लिए अपने विचार बोले हमसे। सभी मंचासीन अतिथियों को मेरा नमस्कार और एवं आमर जो सामने बसिचंती समस्त चाषी भाई भौणी समस्त को मोर जुहार। बिहन गोटे जीवन है, बिहन गोटे जीवन अटे, ताकू आमे सेमिति ग्रेन की अलग पदार्थ भाव नहीं पारिबा नहीं। तो मु जो काम कली कि शिखिली मु मोर संस्कृति रे हूँ शिखी एवं सेटा को मु केबे छाड़ी पारे नहीं। गोटे कथा अच्छी संबलपुरी भाषा रे, आमर पश्चिम ओडिशार भाषा रे गोटे गीत मते बहुत इम्प्रेस करथिला। से गीतटा गीत होची गुंजी कुंडार पिठारे मड़ियाटी खीरी दुर्बलियार दिहे बफू पड़ीबा गजरी कुदो भात बड़ा हित बाबूगा मुनगा साग बुढ़ा है बापिला चमतार नहीं हुए ढिला चकार कानर खिला रे। ये जो गीतटा तार मर्म आपण मैंने जापारे क्यों जुगरू से चली आसी। एमती बहुत गीत अच्छी मिलेट उपरे एवं सुपर फूड जोटा न्यूट्रिशन फूड उपरे। तो आमे यही गीत जो शुणिलु पूर्व लोक पाखरु, तो आमर इच्छा है कि आमे यही जिनटा के बंचेक रखिले आमर दुनिया बंचिक रहिबो। मो बेसिकली खुदो एवं गुर्जी उपरे कहबी। मो विभिन्न प्रकार कंजर्वेशन जो करिछि धान ता उपरे बेसी कहबी नहीं। जो गुर्जीर कथा कहूँ, जो सुआर कथा कहूँ, लिटिल मिलेट कथा कहूँ, ताऊ कौटी सुआ कौटी कुशला कौटी गुर्जी कौटी कुटकी कहते। एवं तार जो खाइबार मजा अच्छी आम पश्चिम ओडिशा रे गुर्जी पखाल रो बहुत आदर थिला से समय रे, कम से कम आमर छोट पिला समय रे। किंतु परे ताहा चाउल को परिवर्तन हो गला। चाउल जो सरकार पाखर फ्री रे मिलला सेटा को धीरे धीरे लोक मैंने छाड़िले। एबे पर्यंत बहुत जगार से गुर्जी चाष होची एवं ओडिशार लोक सेटा न खाती नहीं, बहुत कम खाती, सब नासिक चली जाए। एवं आसब से दिन सांगे सांगे ताकू मड़ा जीव माने थ्रेसिंग करा जीव, संगे संगे ताकू टिके भजा जीव एवं संगे संगे ताकू ढिंकी रे कुटिकी सांगे सांगे भात रांधिक खाइबे। आउ से समय रे मु जानी मो घरे भी 5 एकर पाखापाखि आमर बापा अजा गुर्जी चाष करते तुरंत आनिले खाइले जाई चले। सेते बेले आपन पीडीएस सिस्टम नथिला, किछि नथिला, आमर सबु जागो खाद्य से टाइम रे ही खत्म हो जाउथुला। तो सेटा आमर जीवन को बंचेक रखुला। एवं तार आउ गोटे संस्कृति अच्छी, जो दिन गुर्जी घर को आसब कुंडा तैयारी हेबो गाँव से दिन ठू माछी आ मशा गाँव रु दूरे जीवे। से कथा गोटे आमर परंपरा थिला एवं मशा आ माछी से दिन ठू उभे जीवे गाँव रु। तो सेमती जो गोटे खाद्य जो गुर्जी ताकू आमे केमती बंचेबा तार काम हमको हृदय सहित करने को पड़ो। ताकू आमे जो चाष करूँ मात्र 45 रु 60 दिन भीतर सेटा हो जाउछि एवं थरे बुणिले सेटा को आउ किछि करिवार दरकार नाही। सेते बेले माटीर उर्वरता थिला, एबे उर्वरता नष्ट हो जाइछि। सेते गाई गोरु छेली मेंढा थिले, पशु माने थिले, सब बेरेल रेंडे चरुथुले, तांकर
बेसी दृष्टि न देकरी एटा को ब्रॉडकास्टिंग रे अधिका सहायता देले भल हेबो कारण होची जे ए ब्रॉडकास्टिंग कोले एथिरे आपको हार्बिसाइड मारिबा को पड़िबो नै आपे आपे सब घास गुडा को तार पड़े सेतिरे नष्ट हो जाए कुदो एवं गुर्जी रे तेणु करी सरकार ब्रॉडकास्ट के अधिक ध्यान देवा कथा एवं एटा यार एमएसपी को बहुत ध्यान सहित देवाक पड़ो कौन कि यार एकर प्रति 4 क्विंटाल रु 5 क्विंटाल भितर ही जेते जहाँ कले भी इल्ड हेबो किंतु न्यूट्रिशन भाव में बहुत रिच तो मु आ गोटे कथा कहबी कि जो प्रोसेसिंग ऊपर जोटा अच्छी डिहलिंग आमर गुर्जीर किंबा लिटिल मिलेट डिहलिंगटा असुविधा होची डिहलिंगटा प्रचुर परिमाण गाँ लेवल रे छोट छोट मेसीन गुड़ाक रहा कथा यहाँ को से मैंने जल्दी ध्यान देवार अच्छे एवं आमर जो पश्चिम ओडिशार खाद्य मांडिया खाद्य बेसी नुह आमर गुर्जी एवं कुदोटा आम भात भाव में व्यवहार करूँ मेन फुड हिसाब से सेटा कन्वर्ट हो आगू पुणी रिवाइज केमी करवा एवं मु कहबी कि मशा माछी दूर होबार रिसर्चटा भी कर दरकार अच्छे एवं जो मु गीत रे कहली गुंजी कुंडार पिठा माने जो लिटिल मिलेट हक्स उपरे रिसर्च भी करिवार अछि कहीं से गीतटा लिखाई। धन्यवाद नमस्कार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। नमस्ते। इंफ्रास्ट्रक्चरगत व्यवस्थाएं होती है किसी फसल के साथ तो उसको बढ़ा और अभी मिलेट मिशन में उड़ीसा में वो देखने को मिल रहा है कि अगर सरकार पॉलिसी लेवल में उसको आगे लेना चाहता है तो कैसे पूंजीगत लेवल में ढांचागत लेवल में इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल में प्रोसेसिंग लेवल में मार्केटिंग लेवल में कैंपेन लेवल में वो ले सकता है कि 1-2 ऑर्गेनाइज
building so that we can have a quality seed to the farmers. So we are working on this direction also, and we will strengthen in the years to come. So apart from that, we also evaluated these land races, and we found that the land races are evaluated at Koraput region especially, they were having high nutritional value. So this is a unique output which we outputs which we could get from the experiments which we conducted jointly with farmer groups and also with the Vasan and other NGO groups. So just 2 points, especially in keeping in view of a farmer's point of view. Farmers, when they take up participatory selection, we found that in Odisha, there are 2 constraints. One is the blast disease and the pink stem borer. These are 2 major constraints which is reducing the yield. So farmers, while they take up participatory seed selection, they should take care of that some resistance levels should also be in that land races so that we can stabilize the yield in the farmer's field. So these are some of the points, especially for farmers, and also some of the small agronomic practices, like especially I will tell that if you take up one intercultivation, that will induce a tillering and will be able to yield. These are some of the small agronomic practices, but it is very important so that we can improve the yield, especially in view of farmer's point of view. On the right hand side, a farmer is holding a single plant with 20 tillers. So these are some of the techniques where we can improve the yield, especially in point of farmer's point of view. So apart from finger millet, little millet is also an important millet which we could see in Odisha. So in Odisha mostly it is a Robusta type of land races which is mainly grown. But here I would like to bring one point that on the extreme side we have a variety called BL6 variety. So this particular variety, it is having a bold seed, but here in Odisha we see mostly the Robusta type which is having very small seed. This the extreme right side BL6 which you have mentioned is having bold seed, so we will have better processing so that we will have maximum recovery, and we are planning to have some of the experimentation especially in little millet, so this also can be mainstreamed into the production system. And apart from that, the last variety which I was mentioning, it is also having good level of climate resilience. Whenever there is a problem where irrigation water is scarce, then this type of varieties they can grow so that it can be, we can yield better levels as compared to the. So this is all about some of the views from my side, and I end here saying that the glory of millets is back in the land of rich traditions. Thank you all. Thank you, Dr. Ganpati. ये है कि फार्मर्स के साथ साथ जो साइंटिफिक इनपुट है वो भी साथ साथ चल रहा है, और दोनों को ही इकट्ठे काम करने की बहुत ज़रूरत है. अब इसके बाद मैं बुलाऊंगा मेरे कलीग यहाँ पे हैं पद्मश्री श्रीमती सबरामती जी 5 मिनट के लिए कि हमें मिलेट्स को ऑर्गेनिकली क्यों ग्रो करना चाहिए, उस पर ये थोड़ा सा चानन डालेंगे. Thank you. Respected chair, all speakers on dais and all the participants here. बहुत धन्यवाद मते सुजोग मिली छी एथे कहिबा पई. मोरो कहिबार विषय हला जे आमे मिलेट जहा करूछे. Sorry, say again. I will also in between I'll manage to do it in English sometimes. The question given to me is why should we grow millets organically? माने आमे जैविक उपाय रे काहे कि मिलेट मानो को चाष करिबा सेटा होची प्रश्न अछि. I have a question for all of you. Tell me the answer. Given a choice, who would like to eat poisonous food and feed poisonous food to others? If anybody wants to do that, please raise your hand. आपनका भितरे किए अछंती जे विषाक्त खाद्य खाइबा को चाहिबे और विषाक्त खाद्य अन्य को खुआइबा को चाहिबे. एंती के अछंती हाथ उठाइबे केही नहीं? Then I think I don't have to present it anymore. The answer is with you. If you do not want to eat poisonous food, you don't want to feed poisonous food, then only option left is growing our all crops, not only millets, organically. So the answer is simple. We should grow millets organically for the people and for the planet. आमे अधिकांश समय निजे स्वार्थपर होइकरी केवल आम पाई कोन भल देखुछे
किंतु आमर पिलामानक पई आम पर पीढ़ी पई आमर पृथ्वी पई परिवेश पई कौन भलो आमे से विषय चिंता करूने often we are very anthropocentric and only think about ourselves what benefits us but we forget about other things we forget about our soil we forget about our water we forget about other crops plants other animals like that so can we afford to do that आमे जदि खाली एका बंचिबा कथा चिंता करिबा माटीर कोन हेले जायस नहीं पानीर कोन हेले जायस नहीं then you can grow food as you wish but that is not the solution at all and millets are grown mostly in marginal kind of lands and also sloping land undulated land हमर अधिक हुए जदि देखिबे आपण माने तो जिते गड़निया जमी अच्छी कम बड़ थिबा जमी अच्छी सेठी कंजर्वेशन मेजर विशेष निया जायनी वर्षा हैला माने पानी सांगरे धोई बोहिकरी माटीर उर्वरता मध्य नष्ट हो जाए जे टॉप सॉइल only not the volume of soil we lose we also lose the fertile topsoil in undulated sloping land and that is why we should take care of it and when the topsoil is lost we advise people in the name of soil health cards we advise people to use more chemicals and when it is promoted through schemes we promote agrochemicals as well with the so called improved varieties so if we see very recent reports have come out where it is told to us it is revealed that despite using all these chemicals over the years over the decades the Indian soils are depleting deficient in both three major things NPK nitrogen phosphorus potassium all these percentage reports all these are available on internet so I'm not going to in detail also inorganic carbon and micronutrients amara matti hochi bahut durbal hei sarlani तो सेते बेले जतले परीक्षा करा होची सॉइल हेल्थ कार्ड नारे हमको दिया कुआ होची तुमर माटी दुर्बल अछि आ स्कीम जरिया रे हमें चाष करूचे सेते बेले हमको अधिक फर्टिलाइजर पकेबा को कुआ जाउची जोटा कि सरोज भाई शिव भाई माने सब आगरु ए प्रश्न कहि सारी छंती तने जते बेले अधिक हमें सार पकोचे जमी रे सेते बेले माटी आउरी खराब अवस्था को जाउची जदी फर्टिलाइजर पके की माटी रो फर्टिलिटी बढ़ु थांता उर्वरता बढ़ु थांता ताहले एते बेल को हमर जमी आउरी उर्वर हेई सारंतानी जोटा कि हेउ नाही that is not happening at all so we have to be very careful about it when we apply more synthetic fertilizers we also require more water that is creating challenges for rain fed agriculture system particularly where our millets are grown so we are not only depleting our soil fertility soil resources also challenging our water resources availability of water resources and when we put lot of agrochemicals in the upper stream so the water brings all these things down the chemicals down so the soil and water in the downstream are also getting polluted in this situation the environmental health is very adversely affected as the impacts are not immediately visible directly visible we just take all these things for granted आमे भाबिनो कि हां चाली छी जा चाली थिबो हमको किछि दिन पई अधिक उत्पादन मिली गला सारा पके कि so we are happy but in the long run not even long run medium run all our uplands all our marginal lands they will be more and more unusable जो ठीक है हमें आउ करि परिबानी चाष करि परिबानी तेनो देखिबे जदी अपलैंड मीडियम लैंड रो जति कि एरिया अछि सेटा होची बड़ लो लैंड रो एरिया कम तेनो अपलैंड मीडियम लैंड रे हमें जदी चाष न करि कि छाड़ी दबा दैट विल अफेक्ट आवर फूड सिक्योरिटी एज वेल and when we use more and more chemical fertilizers it is already experienced by the farmers that we become less resilient to weather related challenges जदि झड़ बतास मरुड़ी ए सब विभिन्न प्रकार प्राकृतिक असुविधा है आमे जदि बेसी बेसी फर्टिलाइजर व्यवहार करछे तेणु से फसल माने तांकर सही परिवार क्षमता कम थाए तेणु आमको से दृष्टि असुविधा हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग रो गोटे प्रिंसिपल है क्रॉप बायोडायवर्सिटी वी कैनॉट गो फॉर
in the name of promotion of millets or some other crop, we cannot grow for limited number of diversity, and yield should not be the only parameter. It should be the diversity. And if you look at the whole system, there are so many varieties. Why should we ignore or neglect all those things? If we do that, then we commit a historical mistake, not only for us, also for our future generations. And all this research improvement cannot be done without having a very wide genetic basket. So this is very important for us. And now we have to choose whether we should grow the millets organically or not by depleting our soil, water and other resources. Thankfully, governments have started thinking and working on organic and natural farming. Coming to the issue of people, how it is helpful for people, like our Indian soils are depleted, studies on taste have shown that millets are nutritionally rich foods and have many health benefits. At the same time, the nutritional value of many Indian crops, including millets, have declined over few decades. Because the reasons could be many, and maybe application of chemical fertilizers or pesticides could be the contributing factors. So millets are also known as less expensive crops. कॉस्ट बेनिफिट जदि देखा जाए से खर्च कम हुए बोली कहती अधिकांश जगह आमर लोक मैंने पोड़ू चाष हो बा साधारण जमी हो सीधा बुणी देकरी पलि आसती बेसी किसी खर्च से न थाए जदि आम एक्सटर्नाल इनपुट उपर डिपेंड करवा बाहर आनिबा किणिकी केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड सीड्स एंड ऑल दिस थिंग्स it will not be cost effective anymore. So it will tax the government as well as the farmers. Our resources will be drained out, go to the companies, so we have to be very careful about that. So we should use more locally available, naturally available resources in our surrounding area, inside our village, and find out ways how to enrich our natural capital so that we can grow the crop more sustainably for a longer period. And if we use more agrochemicals, the hidden cost like health hazards, increase, and medical bills also increase, which we generally don't take account of. So if we demand more nutri-crops like millets, the livelihood opportunities also will increase because agriculture is graying. Agriculture is becoming more feminized. More and more older people and women are left to agriculture and more able-bodied men migrate out. So in this situation, millets provide livelihood opportunity for producers as well as for entrepreneurs, and many passionpreneurs are also coming up. So by doing all these things, growing crops naturally, we conserve not only our seeds, we also conserve the entire biocultural heritage, including knowledge of growing, harvesting, processing, storing and eating. Thank you so much. And if I repeat the question again, if we don't want to eat poisonous food and don't want to feed poisonous food, let us opt for only organic millet. Thank you so much. विष खाइबानी विष खुआइबानी, जहर नहीं खाएंगे, जहर नहीं खिलाएंगे. धन्यवाद सभापति जी. Very emphatically you stress the need for cultivating millets organically, not only millets but other crops as well. The message is minimize the use of chemicals as much as we can in all the crops, bringing it to zero. Thank you. We now have Dr. Arshia Noorani from FAO Rome. She couldn't come here in person, but she is available online. Dr. Arshia, the floor is yours for 5 minutes now. Good morning. Good morning. Thank you very much for this. Apologies, as my video signal is not very good today, so I will maintain. Yesterday I did have my video on, so you were able to see me. If she is not ready for a minute, she's ready? Okay. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you, Arshia. Good morning from Rome.
Namaskar, everyone. Thank you for inviting me. It's a pleasure to be with you, even only virtually. My signal is not very good, so I will maintain the video off. I know you know what I look like because I delivered a presentation yesterday. So it's a pleasure to be here. So Kuldeepji, would you be so kind as to remind me of a question that you may have had in mind for me to address at this round table? Yes, Arshia, since you have an expertise in germplasm conservation, so if you have any message to our farmers here, because we have a very good number of farmers who are engaged in germplasm conservation, distribution, sharing, so your experience, the global experience, that will be very much welcome. Thank you, Arshia. Noted. Noted. Thank you. Main messages I would have is that it is crucial to maintain the dialogue between all the different stakeholders, because we have a lot of wonderful farmers, very knowledgeable farmers, and their information, their germplasm is conserved, often, however, is not as high yielding. And whereas maybe in other more formalized structure, you would have access to improved germplasm. And so this dialogue must always remain open. With regard, this is for all the different varietal diversity that we have present. Maintaining a dialogue also with the different sectors, like nutrition. So to have a continual evaluation, characterization of germplasm, both in the field and that's conserved in gene banks. And maybe also looking at the wild relatives, because we also must not forget that there are many, many important genes that are integrated from crop wild relatives. So for millets specifically, this is very important because there are traits for resilience and traits for improved nutrition, bioavailability of nutrients, more than simple availability of nutrients, the transporter systems within these species that have to be integrated to allow for the best possible nutritional relevance, but also for the drought tolerance. The previous speaker was mentioning the quality of soils. It's very important we maintain the quality of soils by also using low input varieties. So making these varieties accessible, linking with the private sector, small-scale seed enterprise development, and very importantly, documentation of both the biological, agroecological, and characterization, evaluation information, but also the traditional knowledge. All of this is very important. I can stop there, and I don't know if you have any other questions. Thank you very much, Arshia, for sharing your global experience with us, and especially stressing on conserving the wild relatives. आर्शिया का ये कहना है कि जर्मप्लाज्म जो उगाते हैं उसके साथ साथ जो जंगली किस्में जो हैं उनका भी कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम देखें जितनी भी मॉडर्न किस्में पिछले 30-40 सालों से आई हैं सिस्टम में, उसमें से बहुत सारा रोल जो है वो जंगली किस्मों का है। और इन्होंने एक और चीज़ पे जो स्ट्रेस किया है वो है हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना। वो ज़रूरी है, जो लोगों की एक्सपीरियंसेस हैं, कहीं ना कहीं हर साल एक ऐसी किताब ज़रूर आनी चाहिए जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हों। अब पब्लिश करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन किताबें अवेलेबल हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजर्स जो हैं आई थिंक इस चीज़ को एक रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगा डॉक्टर दीप्ति रंजन पानी, जो कि ICR NBPGR का जो रीजनल स्टेशन कटक है वहाँ काम करते हैं, वहाँ से प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं।
इनका जो मेन काम है वो उड़ीसा और इस रीजन की जितनी क्रॉप्स का जर्मप्लाज्म जो है उनको इकट्ठा करना और उनको कंजर्व करने का है। तो पानी साहब हमें बताएंगे कि सीड को कंजर्व करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। आपके पास 3 मिनट है सर। Thank you, sir. Just a minute. For the next session, we beg your apology that we'll be extending for another 12 to 15 minutes. Please bear with us. The next session coordinators, please. Thank you, sir. Honorable Chairman and the guests and delegates on the dais and of the dais. I will be discussing about the strategy of seed conservation. यानी बिहन केमती संरक्षण करिबा बिहन संरक्षण करने कथा समस्ते सबू चाषी भाई और भौणी मैंने समस्ते भल भाव जानी था जदि मोर काम होची एनबीपीजीआर रे जे जर्मप्लाज्म कलेक्शन कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किंतु ए बिहन संरक्षण पई कि आमे को टाइप रो स्टोरेज करूचे बिहन कौन कौन प्रकार आम पाखे थाए आमे जानिचे गछरे बिहन संरक्षणटा गछठू आरंभ करी ता नेक्स्ट प्लांटिंग पर्यंत आमे बिहन संरक्षण बोली कहू गछरे जदि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी हो सारा बेले जिते बेले 75% मैच्योरिटी हो व्हेन द प्लांट क्रॉप मैच्योर 75% देन वी विल कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम दैट पॉइंट वी हैव टू टेक केयर फॉर द कंजर्वेशन टिल नेक्स्ट सेशन एमती आम पाखे कमर्शियल सीड कंजर्वेशन दरकार जो मंजी गुड़ा आम सोईंग पर बुणी सारा पर बड़ी पड़ला ताकू आम कि बंचई रखा दरकार बाई चान्स आमको केतबेले असुविधा हम देन जर्म प्लाज्म छोट छोट सैंपल जो विभिन्न वेराइटी लोक मान पाखे देसी वेराइटी थाए जोटा मोर काम से गुड़ाक वी हैव टू कलेक्ट दि जर्म प्लाज्म फ्रॉम डिफरेंट पॉकेट्स डिफरेंट फार्मर्स तार मध्य आम ध्यान देवा उचित जितेबाला आम जदि कौन कौन फैक्टर अच्छी बिहन संरक्षण करवा से कथा जाना से फैक्टर भितर जो काइंड ऑफ सीड को टाइप रो मंजी मन कर जो आम पणस गछर मंजी आ धानर मंजी को समान भाव में रखिपारानी धानर मंजी ऑयल सीड रो मंजी को टिके ट्रीटमेंट अलग हम धान मंजी को मॉइस्चर कंटेंट टिके कम पड़ो ऑयल सीड टिके अधिक रमती जदि मॉइस्चर कंटेंट 8% रू तलक आसला देन आमर इनसेक्ट आ रोग पोक ये सब लगे मॉइस्चर कंटेंट को आमको कम करके 8% को आणिकी देन आम स्टोरेज को नवा पड़ो तापर स्टोरेज केते प्रकार किछि माँ भौणी माने आम घरे छोट छोट बीन रे छोट छोट डब्बा रे छोट बैग रे रखती किंतु ताको जोड़ी सेठी रखिदेले हबनी जो जगार आम रखा सेटा को टिके सफा करथिबा एवं सेठी जेंति मूसा अन्य पोक न आसीबे ता पे टिके ट्रीटमेंट करबा आ ता छड़ा मॉइस्चर कंटेंटटा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एरिया सेटा होछि सबुटु बड़ प्रश्न सेटा को आम कंट्रोल करवा जगटा को भल भाव सफा करवा एवं जो जगार आम बिहन गोदाम रे रखुचे जदि आम कमर्शियल सीड है देन वी हैव टू पुट इट इन द गोडाउन सो गोडाउन रो केयर केमती नबा यू ऑल आर नोइंग हाउ टू टेक केयर ऑफ द गोडाउन फॉर एग्जांपल जदि छोट छोट भंगा अच्छी कोटी होल अच्छी कोटी अच्छी ताको बंद करवा देन जदि छोट छोट झरकार आम तार जाली मेस लगेवा मूसा आसबनी बाकी सेटा को फ्यूमिगेट करवा जमीती आमर फ्यूमिगेटर सब अच्छी ताकू आनिकी फ्यूमिगेट करवा जोटी आमको कीट पतंग लगे एवं प्रति वर्ष हाँ स्टाकिंग जो करवा आम एका बेले लटटा बहुत लदी देवानी गोटे लट को आम जिगजाग वे रखा क्रिस क्रॉस आम कहूँ गोटे एमती रखिले गोटे टिके उल्टा माने गोटे ऊपर आ गोटे उल्टा भागे रखा कारण तार मॉइस्चर ठीक भाव में पाइब आ छड़ा आम जो बैग यूज करवा से दी प्रकार मिलता है बैग धरतु गनी बैग है जो पोरस थी जो एयर और मॉइस्चर मूवमेंट हो पार यही सब प्रति आम ध्यान देले आम सुविधा भाव में जर्मप्लाज्म सॉरी सीड को भल भाव में रखिपर या छड़ा आमर एनबीपीजीआर जो कटक अच्छी सी पाखापाखि 20टी कलेक्शन कर सारी एरिया एवं आमर नेशनल जीन बैंक दिल्ली रे अराउंड 50,000 मिलेट जर्मप्लाज्म कंजर्व होगी अच्छी एवं केवल कलेक्टेड होता जर्मप्लाज्म 20,000 अच्छी जहाँ जितेबाला कौन मिलेट वेराइटी जदि केतबेले दरकार हुए देयर इज ए वे यू विल गेट द वेराइटी ऑफ मिलेट्स फ्रॉम आवर एनबीपीजीआर देयर इज ए वे वी हैव टू फॉलो फॉर दैट वी हैव टू गो टू एनबीपीजीआर वेबसाइट एंड देयर इज एवरीथिंग इज देयर वी विल कलेक्ट we can contact the dignitaries there and we will get the material. Thank you very much. धन्यवाद डॉक्टर पानी। In fact, इंडिया एक पहली कंट्री है जिसने फार्मर्स राइट्स का एक्ट भी लेके आए हैं टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स राइट्स, खासकर उनके सीड जो है कंजर्वेशन के लिए हैं। बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, 1-1.5 दहाका ही हुआ है,
बट बहुत सारी सक्सेसफुल एग्जांपल्स भी हैं जहां फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया गया है, या फार्मर्स की जो किस्में हैं उसमें से फार्मर्स को बहुत सारे फ़ायदे भी मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। मैं ज़्यादा उस पर नहीं कहूँगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपल राय चौधरी जो PPVFRS से हैं, जॉइंट रजिस्ट्रार हैं। 3 मिनट में आपके देता हूँ आप। थैंक यू चेयर। सारे किसान भाई और बहनों को हमारे नमस्कार। जैसे इसमें बताया गया है कि अथॉरिटी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी 2001 का अधिनियम के अनुसार दिल्ली में बनाया गया है। हमारे जो नियम है उसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें फार्मर्स राइट्स और ब्रीडर्स राइट्स को भारत में एक स्थापना करना है। इसके अलावा किसान और बाकी लोगों को अगर सही मायने पे जो वैरायटीज़ की सीड मुहैया करवाया जाए, इसके लिए ये हमारे अथॉरिटी है। इसमें कई सारे आप देखेंगे प्रोविजंस दिया हुआ है, फार्मर्स राइट्स, कम्युनिटी राइट, रिसर्चर राइट, कंपल्सरी लाइसेंसिंग, ब्रीडर्स राइट, जिन फंड और कई सारे सिस्टम है। हम बेसिकली क्या करते हैं, जब ये एप्लीकेशन आते हैं हमारी एक डस्ट टेस्टिंग होती है। ये जो डस्ट टेस्टिंग में हम हमारे पूरे भारत में डस्ट टेस्ट सेंटर बने हुए हैं, उनमें से उड़ीसा में CRRI कटक जो है वो राइस में काम करते हैं। इसके अलावा तकरीबन 189 क्रॉप स्पीसीज में हमारे और सारे भारत में आप देखेंगे डस्ट टेस्ट सेंटर्स बने पड़े हुए हैं। मैं आज आप लोगों को फार्मर्स राइट्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। प्रीतेश फार्मर्स राइट्स हाँ, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट प्लीज। ये फार्मर्स राइट्स में तकरीबन 9 किस्म की अधिकार किसानों को दिया गया है। सो इसमें राइट ऑफ जस्ट अ मिनट बैक राइट ऑफ कम्युनिटी है, कंपल्सरी लाइसेंस है, आप देखेंगे किसान के एक्सेस टू सीड दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर्स वैरायटीज। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी की किसी भी देश में फार्मर्स राइट्स में राइट्स की कोई प्रोविजन नहीं है, ना कोई ट्रेडिशनल वैरायटी की रजिस्ट्रेशन की कोई सिस्टम नहीं है। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जब अथॉरिटी शुरुआत हुआ था 2008-9 में इसके काम शुरू हुआ था, उस समय 3 वैरायटी रजिस्ट्रेशन हुआ था राइस में। लेकिन उसके बाद CRRI डॉक्टर धुआ सर यहाँ पे बैठे थे, उन लोगों ने और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उस समय डॉक्टर RS गोपालन थे डायरेक्टर एग्रीकल्चर, उन्होंने एक मुहैया किए थे पूरे कटक पूरे उड़ीसा में उन्होंने सर्वे करवाया, जिसकी उसके बाद इस वैरायटीज़ की राइस मेनली राइस वैरायटीज़ की उन्होंने इवैल्यूएट करवा के they have registered about 717 varieties, out of which these are all distributed all across different 30 districts of Odisha. So apart from that, we also have, this is the map where from we get applications of farmers varieties, and you can see that mostly we have a representation from all over India, and India is a major or minor hotspots, diversity of many crops including rice, millets and all. So एक important चीज़ है फार्मर्स के लिए, एक अवार्ड की सिस्टम है जिसमें नेशनल जिन फंड सरकार ने बनाए हैं। इनमें से हम सरकार कुछ पैसा देते हैं, हमारे जब वैरायटी रजिस्टर्ड होते हैं उस वैरायटी की एनुअल फीस इसके अंडर आते हैं, और इसमें से हम एक कुछ अवार्ड्स देते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। आप देखेंगे इसमें एक जीनोम सेवियर अवार्ड दिया जाता है। मिस्टर हागीवारा वाज देयर ऑन 12th of September. It was before the ITPGRFA Farmers Rights Conference. Back. So honorable honorable President ma'am, she has given award to about 21 जो अवार्डीज है, बंगाल से हैं कम्युनिटी अवार्डीज, उत्तराखंड से कम्युनिटी अवार्डीज है, इंडिविजुअल अवार्डीज भी है जो आसाम से है, मिलेट्स के ऊपर काम करते हैं लहरी बाई मैडम, इन सब लोगों को हमने अवार्ड दिया है। और आप देखेंगे ये जो जिनोम सेवियर अवार्ड कम्युनिटी अवार्ड की एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उड़ीसा से बहुत दिन पहले साहू साहब हमारे यहाँ पे बैठे हैं, उनके कम्युनिटी को हमने एक अवार्ड दिया, उसके बाद एक दो। तो मेरा इसमें कल हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र साहब ने भी बताए हैं कि हम चाहते हैं कि जो मिलेट्स की वैरायटीज़ है आपके यहाँ पे रजिस्टर हुआ है,
4 वैरायटीज़ की लिस्ट आप लोगों ने बताए हैं, उसको मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि फार्मर्स वैरायटीज़ की रजिस्ट्रेशन में किसी कोई पैसा नहीं देना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं है, एनुअल फ़ी भी नहीं है। इसके बाद जितनी भी वैरायटीज़ की कैरेक्टराइजेशन RRA नेटवर्क ने किया है या कोरापुट में MSSRF ने किया है, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाइए। जितनी भी हेल्प चाहिए, we will extend each and every help. So that's from my time, sir. Thank you. I hope I talk within my limits. थैंक यू दीपल। आई एम श्योर आपका स्टॉल यहाँ पे होगा। स्टॉल नहीं लगा? ओह, that's we missed it. Well, thank you. हमारा पहले प्रोग्राम था कि किस बाकी स्टेट के फार्मर्स को भी इनवाइट करेंगे, पर कंपेलिंग ये है कि भाई टाइम हमारा ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा अब नहीं कर सकते हैं। मैं 2 या 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लूँगा आपसे कि जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुई या मॉडर्न साइंसेस आई, सारा कुछ ये तो ध्यान आ गया था कि जो फार्मर्स की वैरायटीज़ हैं, किस्में हैं, वो अगर कंजर्व नहीं की जाएंगी तो हम कहीं ना कहीं उनको खो देंगे। तो ये तो बहुत पहले ही कॉन्सेप्ट आ चुका था 60s 70s से, और एज ए रिजल्ट हमारी जो जीन बैंक है, नेशनल लेवल की जीन बैंक, वो एक बहुत बड़ी जीन बैंक है। इस वक्त करीबन 4.5 लाख एक्सेशन उसमें अलग अलग करीबन 1800 क्रॉप्स का वहाँ पे कंजर्व्ड है। फील्ड जीन बैंक्स भी हैं और भी हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल जीन बैंक्स भी हैं, जिसमें से एक जीन बैंक है जो एकरी सेट की है जहाँ मैं काम करता हूँ। तो 78,000 हमारे पास अलग अलग किस्म के बीज जो हैं वो सिर्फ मिलेट्स के ही हैं, जो कि करीबन 120 मुल्कों से हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं कंजर्व की हैं, उसमें से उड़ीसा के भी हैं, बाकी स्टेट्स के भी हैं। डॉक्टर पानी यहाँ बोला कि हमारा नेशनल सिस्टम जो है उसमें भी हैं। अब नेशनल सिस्टम काम तो कर रहा है, बट पॉसिबल नहीं है कुछ साइंटिस्ट के लिए कि वो देश के हर एक कोने तक पहुंच सकें। तो जो ये फार्मर्स की कंट्रीब्यूशन है जर्म प्लाज्मा को कंजर्व करने के लिए, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सो एक्चुअली कहीं ना कहीं हमें इस मुहिम को, इस मूवमेंट को बहुत स्ट्रांगली आगे करना पड़ेगा, ताकि फार्मर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो जर्म प्लाज्म कंजर्व करने के लिए वो आगे आए। हमारे कुछ फार्मर्स ने ऐसे समय रास्ते भी दिखाए हैं, PPFR ने उनको रिवार्ड भी किया हुआ है, उनको नहीं दिया, उनको एक्नॉलेज किया है कंट्री ने कि भाई आपका जो काम है वो अप्रिशिएबल है। पर एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, जो मैं देखता हूँ, क्योंकि खासकर इस स्टेट ने जो मिलेट्स के लिए या बाकी और क्रॉप्स के लिए जो मुहिम चलाई है कंजर्वेशन की, हमारे फार्मर्स जो हैं वो कर तो रहे हैं, बट इस चीज़ को कहीं ना कहीं साइंटिफिकली ट्रेनिंग्स जो हैं परमते जी, वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो मेरी एक रिकमेंडेशन ज़रूर होगी पर्सनल लेवल की कि ICR NBPGR, एक्रीसेट जो कि एक इंटरनेशनल जीन बैंक है यहाँ पे, PPVFRA, और जो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं फार्मर्स की जो कंजर्वेशन को के साथ डील करते हैं, इकट्ठे हो के कुछ जो ट्रेनिंग्स हैं फार्मर्स लेवल तक की वो ज़रूर दें, ताकि हम फार्मर्स को ट्रेन कर सकें कि वो अच्छी तरह से जर्म प्लाज्म जो है कंजर्व कर सकें। और ये भी बताऊं आप फार्मर्स को कि नेशनल लेवल की जो फैसिलिटी है हमारे पास दिल्ली में या यहाँ कटक में भी है, या मैं देख रहा हूँ कि स्टेट डिपार्टमेंट ने भी अपनी यहाँ शुरू की है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आप अपने घरों में बहुत ज़्यादा देर तक बीज नहीं रख सकते हैं, वो ख़राब भी हो सकता है। उसकी एक एक कॉपी अब ज़रूर, चाहे तो स्टेट जीन बैंक में कीजिए, चाहे नेशनल जीन बैंक में कीजिए, आपके नाम की जो एक्सेशन है वो वहीं रहेगी। क्योंकि जो PPFRA में है, अगर आप प्रोटेक्शन मांगते हैं तो उनके पास जाएगी, अगर आप वैसे रखना चाहें तो NBPGR एक जगह है जहाँ पे आपका सीड जो है सेफ है, आपके नाम पे है, और वो बाकी लोगों के साथ भी शेयर किया जा सकता है। इसी दिन वालों से मैं I'm really thankful to the organizers giving me this opportunity। मैं आया हूँ सुबह, आप सबके साथ यहाँ बैठे हैं, 1 घंटा आपके साथ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, PPVFRA रेगुलरली ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम। लास्ट में Sabarmati ma'am was chaired a session at CRRI and we have interacted with lot many people
lot many farmers. We tried to convey the work that we are doing and expect farmers for PGSC award applications. Thank you. धन्यवाद यहाँ बहुत समय है या पर सेशन भी आसो तेणु कस्टमरी vote of thanks. I extend the vote of thanks to the chair, the co-chair, all dignitaries, FAO and farmers. समस्त की धन्यवाद देकरी आउ जो मैंने ऑर्गेनाइजर्स समस्त की धन्यवाद दे चेयर को अनुरोध कर टू क्लोज द सेशन. थैंक यू. Yeah, our sincere thanks to FAO India, who have organized this session and who were coordinating this session. Thank you very much to FAO India. Thank you.